Hi guys, we are starting with the central nervous system, brain from the lesson neural control and coordination. We will quick take the NCERT recap. So here the brain क्या होता है? Brain is the central information processing organ of our body, also act as command and control system. It controls voluntary movement, balance of our body, functioning of the vital involuntary organs like example lungs, heart, kidney, thermoregulation, hunger, thirst, circadian rhythm, that is 24-hour rhythm of our body, activities of several endocrine glands and human behavior. It also act as a site of processing of vision, hearing, speech, memory, intelligence, emotions, and thoughts. The human brain is well protected by the skull. Outside, it is covering of the skull. Inside, covering of the cranial meninges. That is dura mater, arachnoid, and pia mater. That is DAP. D for dura mater, D for dur. P for pia mater, P for pass. You have to do this like this. So फोर ब्रेन क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट होता है. फोर ब्रेन में आता है सेरिब्रम क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट. सेरिब्रम के अंदर क्या होता है? इपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. देन olfactory lobules are also there. Next is midbrain is corpus chondrogemmina and cerebral peduncles. Next, hindbrain cerebellum, pons and medulla oblongata continues with the spinal cord. Next, in this picture you will see forebrain में क्या आता है? cerebrum, this is the largest part till here. All this is cerebrum. This is cerebral hemisphere. Thalamus, hypothalamus. Hypothalamus is situated at the base of thalamus. You should keep in mind this, that hypothalamus is situated at the base of thalamus. Midbrain and hindbrain में क्या आता है? Pons, medulla and cerebellum. Next, this is corpus callosum which joins both the hemisphere, that is right and left. These both the hemisphere, right and left hemisphere, are joined by corpus callosum. Callosum means collap means joined, so it is called as corpus callosum. What it does? It joins the left and right part of the brain. collap वो क्या करता है? कोलैप करता है लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को. नेक्स्ट, both the hemisphere are joined by, here I have written this, both the hemisphere are joined by corpus callosum. Important, you should keep in mind. Next, its cerebral hemisphere divided into frontal, parietal, occipital and temporal. So here you will see, this is frontal lobe, this is parietal lobe, this is temporal lobe, and this is occipital lobe. So what it does? Frontal lobe, creative, numericals, voluntary motor activities, this all is done by frontal lobe. Next, parietal lobe में क्या होता है? Feeling, hot, cold and touch. Temporal is near the ears, so you will say that temporal lobe does sound interruption is done by temporal lobe. Why? Because it is close to ears. Here you will see. नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल लोब में क्या होता है? सेंसेशन ऑफ लाइट. नेक्स्ट, आउटर लेयर ऑफ सेरिब्रम क्या होता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज द आउटर लेयर ऑफ सेरिब्रम. दिस इज ग्रे मैटर. सेरिब्रल कॉर्टेक्स, आउटर लेयर ऑफ सेरिब्रम क्या होता है? ग्रे मैटर होता है. और इनर क्या होता है? वाइट मैटर. वाई इनर इज वाइट मैटर? बिकॉज इट हैज़ myelinated axons, because here are myelinated axons, so it is called as white matter. This is important, where is gray matter and where is white matter. So outside there is gray matter because there are no myelinated axons are inside, so there is white matter. Then here left and right hemisphere are joined by corpus callosum means collap. Next, these are gyri and these are sulci. So cerebral cortex outer
लेयर ऑफ द सेरिब्रम. सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है? आउटर लेयर. वो क्या करता है? सेंसरी एरिया होता है, मोटर एरिया एंड एसोसिएशन एरिया. वेयर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या क्या होता है? सेंसरी एरिया, मोटर एरिया एंड एसोसिएशन एरिया. एसोसिएशन एरिया में क्या क्या आता है? इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन. सेंसरी एरिया में क्या आता है? इंटरसेंसरी. एसोसिएशन एरिया में क्या क्या आता है? इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड communication. So next is thalamus. Thalamus is the relay center. Why it is called as relay center, I will tell you. But so here is the thalamus. So all the sensory impulses coming from the thalamus, coming from the spinal cord, has to pass the thalamus before reaching to cerebrum. Got it? अगर कौन सा भी मैसेज से स्पाइनल कॉर्ड से आएगा तो उसको थैलेमस से पास होते हुए सेरिब्रम के पास जाएगा. सो उसकी वजह से थैलेमस एक्ट एज अ रिले सेंटर. नेक्स्ट, हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस इज एट द बेस ऑफ थैलेमस. यू शुड learn this, that hypothalamus is situated at the base of thalamus. It is also called as base of diencephalon. Hypothalamus situated at the base of diencephalon. This is PYQ. So next, hypothalamus is the connecting link between nervous and endocrine system. Very very important. क्या होता है? हाइपोथैलेमस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम. थर्मोरेगुलेटरी सेंटर कंट्रोल्स टेम्परेचर, कंट्रोल करता है थर्स्ट, कंट्रोल करता है हंगर, कंट्रोल करता है एंड कंट्रोल सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स. नेक्स्ट इज लिम्बिक सिस्टम. लिम्बिक सिस्टम में क्या आता है? अमागडाला एंड हिप्पोकैम्पस. अमागडाला क्यों? क्योंकि ये अलमंड शेप होता है. ये क्या करता है? कंट्रोल्स फियर एंड एंगर. नेक्स्ट इज हिप्पोकैम्पस. हिप्पोकैम्पस में क्या होता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी. नेक्स्ट, द इनर पार्ट ऑफ द cerebral hemisphere, a group of associated deep structures like amygdala, hippocampus forms a control complex structure called as limbic system and limbic lobe or limbic system. What is given that inner part of cerebral hemisphere, cerebral hemisphere के जो अंदर का पार्ट होता है वो क्या करता है? वो और डीप एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर का पार्ट और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स लाइक अमागडाला एंड हिप्पोकैम्पस, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. उसको हम क्या कहते हैं? लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम. लिम्बिक सिस्टम अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ सेक्शुअल बिहेवियर and expression of emotion. This is also very very important. This line is also very important. Next, forebrain, you can read this. I have taught exactly what in it. Then there is midbrain. midbrain में क्या होता है? कॉर्पोरा, कॉन्ड्रीजेमिना और डक्ट होता है. सेरिब्रल एक्विडक्ट, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड डक्ट ऑफ सल्वेस, वो भी मिडब्रेन में ही होता है. सो द मिडब्रेन इज लोकेटेड between the thalamus hypothalamus of the forebrain and pons of the hindbrain. A canal called the cerebral aqueduct passes through the midbrain. एक कैनल होता है, उसे हम कहते हैं cerebral aqueduct. Cerebral aqueduct which passes through the midbrain. So the dorsal part of the midbrain consists of mainly ये ऐसे 4 swellings होते हैं dorsal part के. dorsal मतलब पीछे का पार्ट. वहाँ पे क्या आता है? 4 स्वेलिंग्स होते हैं. उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना. 4 स्वेलिंग्स आर कॉल्ड एज कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना. क्वाड्रीजेमिना मीन्स 4, क्वाड्रा मीन्स 4. सो कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना. और यहाँ पर क्या होता है? सेरिब्रल एक्विडक्ट भी होता है. उसमें क्या होता है? सेरिब्रल एक्विडक्ट में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. नेक्स्ट इज हाइंडब्रेन. सो हाइंडब्रेन में क्या आता है? सेरिबेलम, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर. सो जो सेरिब्रम था वो किससे कवर्ड था? वो कॉर्पस कैलोसम से वो कवर्ड था. और जो सेरिबेलम है वो किससे जॉइंट है? वर्मिस से. सो सेरिबेलम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्री ऑफ लाइफ. ट्री ऑफ लाइफ सेरिबेलम में किसको कहते हैं? अर्बर वाइटी, ट्री ऑफ लाइफ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, एनसीईआरटी में क्या क्या दिया है हाइंड ब्रेन के बारे में? द हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला.
Pons consist of fiber tracts that interconnect different ranges of the brain. Cerebrum has very convoluted surface in order to provide the additional space for many more neurons. The medulla of the brain is connected to the spinal cord. The medulla contains center which controls respiratory, cardiovascular reflexes, gastric secretions, which controls respiration, cardiovascular and gastric secretion. The three major regions make up the brain stem. This is very important. This is PYQ. That which are the major regions forms the brain stem. Three major regions which midbrain, pons and medulla oblongata. Midbrain, pons and medulla oblongata. ये क्या है PYQ. Midbrain, pons and medulla oblongata forms the brain stem. Brain stem forms द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन स्टेम क्यों कहा है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो कनेक्शन है उसको क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. दैट्स ऑल. थैंक यू.